Hello students. So today we are going to start standard 6 chapter number 6 substance and daily uses. So as you can see there are the different objects which we see in our day to day life. There are all the substance are made up of very small particles and objects are made up of substances. Object have a specific shape, their parts have a specific arrangement by which we identify them. We use wood, plastic or steel to make a table, chair or cupboard. These substances have a strength required to make this article. The same substance or material can be used to make many objects. There are so many objects we can make with the same substance. For example, by using plastic only, you can make a table, you can make a chair, you can have a plastic utensils, you can make a toys, then pipes. These are the different things which you can make only by using a plastic. So for example, like cotton, we can use make a cloth, fiber or thread, sarees, handkerchief by using cotton. We can make a bar, griddles, tables, automobile part, cart, cupboards, etc. by using iron. So substance are of two types according to their uses. This is the most important. How they are being used on the basis of there are the two types of substances. The one is natural substance and another one is man-made substance. The natural substance are the substance which is available by the nature. Human cannot make that substance or mankind cannot create that substance. So by using natural factors. Now in the natural factors there are two more types. The one is biotic substance and another one is abiotic. Biotic substance means by the nature, but the substance should be from living thing. For example, biotic में like wood which comes from tree and the tree is a living thing. And also in the biotic, the next one is like a wool. Wool come from the animal. There is an animal in snow bear. From their body we got the wool. Cotton is nothing but the kind of a plant. We get the cotton from plant. So all this comes under the biotic substances. Now what do you mean by the abiotic? Abiotic substance means that the substance which come from the nature but should be from non-living thing. For example, air, water and land, soil. These are the three non-living or abiotic substances. So we get the rock, right? We are using rock for the so many purpose. For example, for construction we required a sand and etc. So this is nothing but the abiotic substances. So in the natural there are the two type, biotic and abiotic. In biotic, there is animal origin and the plant origin. Animal origin means jute, cotton, animal origin means leather and wool, which obtained from the animal. Plant origin means which obtained from the plant. Now, the next is man-made. Now, it is a human nature to strive for the new, never things and try to make a life more comfortable. Now, this is the human nature. We always try to make a new things. So, there are the man-made substances. Now, man-made substance means that the substance produced by processing naturally available substances. Means that the whatever the substance are present in the nature, by using them, we are creating the new substance. For example, by using so many natural factor, we make a plastic and we are using plastic for so many different things like TV set, refrigerator, etc. Big curtains, thermocols are being used. All these are the man-made substances. These substances are the waterproof and the water resistance, light in weight. So there are so many different things which are made up of man-made substances. As you can see the column that the area of use is nothing but the construction. In the construction, the natural substances like bamboo, stone, soil, wood, coconut and limes are used. While in the construction, the man-made substance are bricks, cement, concrete, galvanized sheets, clay, tile, plastic, etc. are being used. Writing material. In the writing material, the natural substances like tree barks, pen made from the reeds, dulpatia, stone slates, stone walls in caves, soils and colors. These were used in the earliest period. Nowadays for the writing material we are using pen, pencil made from the plastic and the metal paper. Now
let's see how the production of rubber is happening. The rubber is of a two type. The one is natural rubber, which we get from the natural tree. As you can see in this picture, this is the Sam tree, or called as a rubber tree. We get from the nature. And next is man-made rubber. Man-made rubber is we get by the vulcanization of rubber. In this, by using a natural rubber जो liquid form में, or that is available in the liquid form, we get this white color rubber. We heated it rubber with the sulfur dioxide. We mix the sulfur in this, and then we heat this, and after the sufficient proportion in sulfur mixture, it is determined by the purpose for which the rubber will be used. Means how much sulfur should be added in the natural rubber is depend on for which purpose that rubber is being used. Either you are going to make a toy, you are going to make a tire, or you are going to make a ball. Depend on that, it has been decided that what amount of sulfur should be used in that rubber. Next is paper. Paper, this is nothing but the process of paper. We take the trees woods from tree, then we just bark that tree, means उसका जो cover होता है ना ऊपर का tree का, वो आपको निकालना होता है. Then after that you have to cut that trees that wood into small pieces. Small pieces के बाद उसका crush करना है. After crushing that you have to add a dye. Different chemicals are there, you have to add that chemical in that. उसके बाद में उसको मिक्स करना. उसके अंदर पल्प्स होते हैं, पल्प्स आपको हटाने, मिक्सी जैसा होता है वो एक, उसके अंदर करना है. देन प्रेसिंग विद द पल्प रोलर करके उसके रोल्स रेडी करते हैं. ये एंड में ये रोल्स रेडी होते हैं, फिर इन रोल्स को अलग अलग शेप में कट किया जाता है. दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ rubber making. Coniferous trees like a pine are used to make the paper. The bark of the log of this tree is first removed and the wood is broken into a small pieces. The mixture of these pieces and some chemical is kept soaking for a long time. It helps to form a pulp when a chemical process is completed. The fibrous substances from the wood pulp are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through the roller, dried from the paper, and finally wound on the reels. Paper and the wood are closely related to save the trees. So it is very necessary for us to use that paper. So whenever you will use a paper, just make sure that you will use it in a proper manner and उसको अच्छे से safely use करो. Don't waste the paper, because paper we get from the trees and trees are very important part of our nature. Next is synthetic fiber and threads. Fiber means कपड़ा, हम लोग जो कपड़ा use करते हैं ना, cloth. That cloth is called as fiber, and thread. So from the time it was thought that the artificial yarn could be produced to meet the clothing need of an increased population. Much research and the progress has taken place in this field. Innumerable kind of a synthetic or artificial threads are now available. Nylon, Declon, terylene, polyester, rayon, names of the various synthetic fiber. Now, as the population increases, the natural fiber is not sufficient for this much population. So what have done, scientists have made a artificial फाइबर. मतलब क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से थ्रेड्स बनाए और फिर थ्रेड से कपड़े, क्योंकि नेचुरली फिर उसको पूरा 1 ईयर लगता है. प्लांट से अगर आप लेते हो तो पूरा एग्रीकल्चर करने में, फार्मिंग करने में 1 ईयर जाता है. एनिमल्स भी इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल्स नहीं है, सो इसलिए, और पॉपुलेशन कंटिन्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. सो टू मेक दैट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ एंड फाइबर, साइंटिस्ट हैज़ मेड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नाउ दे आर पॉलिस्टर, rayon, terylene, Dacron, nylon. These are the synthetic fiber. Almost all the articles made from the natural fiber in old days can now be made from the synthetic thread. देखो नाइलॉन कैसे बनता है. देखो, these threads were invented at the same time in the न्यूयॉर्क एंड लंडन. न्यूयॉर्क एंड लंडन दोनों जगह साथ में ही उनका इन्वेंशन हुआ है. दैट्स वाई दे टेक अ नेम ऑफ NY फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंडन, एंड द नेम ऑफ दैट फाइबर दे take place, that is name that fiber as a nylon. Nylon thread have a shine and a strong, transparent and the water resistance. They are used to manufacture cloth, fishing nets, rope, etc. Next is rayon. Cotton and wood pulp is dissolved in the chemical. रेयॉन बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉटन और वुड को डिज़ोल्व करते हैं एक केमिकल के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू मेक अ सोल्यूशन. थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन. एज द रिजल्ट थ्रेड हैव सम शाइन. रेयॉन के अंदर काफ़ी शाइन होती है, इसलिए इसको सिंथेटिक सिल्क, मतलब नेचुरली सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, रेशम का कीड़ा. जो रेयॉन है इसे सिंथेटिक मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कंपनी में बनाया गया सिल्क बोलते हैं.
Next is Decron and Terene. Various hydrocarbons obtained from the mineral oils are used to make a polymer chain. A solution of such a polymer is processed through a strainer with the fine holes. The fiber from after cooling are long and unbreakable threads. These threads are twisted to obtain the yarn. Different types of chemical are used to make a thread of a various property. Now अलग अलग टाइप के फाइबर्स बनाने के लिए अभी अलग अलग केमिकल्स को, अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है. मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल, लाइक शिफॉन है, वेलवेट है, देन विंटर क्लोथ्स आर डिफरेंट, नहीं क्या, स्वेटर्स वगैरह जो हमारे होते हैं, ऊन वगैरह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर. जो कंपनी में जो सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है उसका एडवांटेज और शॉर्टकमिंग्स क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेजेस है कि ये फाइबर काफ़ी ज़्यादा हम बना सकते हैं, ज़्यादा मतलब कम टाइमिंग में आप ज़्यादा बना सकते हो. प्लस दे आर कॉस्टलेस, यानी कि सस्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बार बार आप इनको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हो. पानी इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर रेपिलियंट होते हैं, लाइक रेनकोट्स वगैरह, क्या इनमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता. हल्के होते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं. ये काफ़ी शाइनी होते हैं, इसलिए ये पहनने के बाद बॉडी पे काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं. और ये रिंकल फ्री होते हैं, इनको बार बार प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ द शॉर्ट्स कमिंग्स आर दे आर वाटर रेपिलेंट. अभी देखो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे. वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से क्या होता है, बॉडी के ऊपर हमारा जो नेचुरल स्वेट है, जो पसीना होता है, वो डायरेक्टली बॉडी के ऊपर अवेलेबल होता है. उसकी वजह से काफ़ी लोगों को घमौरिया एंड स्किन रैशेस का प्रॉब्लम होता है. कंटिन्यूस यूज़ ऑफ दिस क्लोथ मेड ऑफ थ्रेड कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज अ स्किन डिसीजेस. अभी देखो ये नेचुरली नहीं है, सिंथेटिक है, तो बार बार ज़्यादातर इनको पहनने से ना स्किन डिसीजेस, किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम होता है. सिंथेटिक क्लोथ्स कभी कभी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली गर्मी के सीज़न में. क्यों? क्योंकि गर्मी में हमें समर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा स्वेट होता है, एंड ड्यू टू दैट स्वेटिंग प्रोसेस दिस क्लोथ कैन नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट. सिंथेटिक फैब्रिक कैचेज द फायर ईजिली. ये आग को ईजिली पकड़ लेते हैं, इसीलिए जब भी आग को अगर ये पकड़ते हैं तो जो पर्सन है उसको सीरियस इंजरी हो सकती है. एंड दिस फाइबर आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये नेचुरली ख़त्म नहीं होते. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6.